हमारे जजेस यानी कि जज साहब 1 से 2 आए हुए हैं और भी आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने हमारे टीम के जितने हमारे फैमिली के लोग हैं सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज जो है यहाँ से नहीं, सिर्फ आंध्रा से और तेलंगाना से नहीं, केरला से और तमिलनाडु से और कर्नाटका से और बॉम्बे से कई लोग यहाँ से जो है आए हुए हैं। और अगर मैं उन लोग को, कई लोग बोल रहे थे कि सर हम जो है हमारी टीम के साथ आएंगे, तो मैं बोला नहीं, टीम के साथ जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट के 1 आदमी 2 आदमी आइए, जो प्रेसिडेंट है और जो सेक्रेटरी हैं। इसके लिए क्यों कि हमको ये हाल छोटा मिल गया, बहुत जगह कोशिश करे, इसके पहले रविंद्र भारती में करे थे और जो है कई जगह पे जो है हम मीटिंग करे थे तो सक्सेसफुल हुआ था। और आज जो है मैं जितना जरूरत है उतने ही लोग को जो है मैं बुलाया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जितने लोग आए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर इस बार नहीं सर, माइक आपके पास है। इनके जो है चेयरमैन साहब उल्लू चंद्रिया साहब जो है अभी जो है रिटायर हुए थे, मैं मीडिया में डाला था कि साहब को हमारे फिर से जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो है बुलाया जाए करके मैं न्यूज में भी डाला था। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं सर जी कि आप ऊपर आइए डेस्क में प्लीज सर। सर is Honorable Justice Chandraya sir, and also he has been the chairman for Human Rights Council. It's so wonderful sir for giving us time. Please sir. तालियां ना बहुत अच्छा लगता है, तालियां तो गाना होता है, क्योंकि इनको मिलना बहुत ही मुश्किल है देवी और सज्जनों, तो हम लोग इन लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। मगर आज सलीम साहब जो है रिटायर जज साहब हैं, और जरा डेस्क पे आइए प्लीज। सर के बारे में बोला है तो बहुत कुछ है देवी और सज्जनों, इतना सारा काम किया है। थैंक यू सर। सर टाइम के इतने मायने रखते हैं कि बढ़िया है sir. Thank you sir. It's an honor to be here. Salim sir has been there as a chairman for state legal cell. Sir, thank you so much sir for being over here. Thanks a lot for gracing the event sir. मैं मोहम्मद शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है ये लेके आने में हम बहुत तकलीफ उठाए। ये लाने के बाद ऐसा था कि पहले मैं दूसरे में था, दूसरे के साथ मैं काम कर रहा था, जैसे कि नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में किया और उसके बाद और दूसरे ऐसा किया। लेकिन क्या हो गया कि इंडिया लेवल में जब मैं कम से कम बोले थे 17-18 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स में, सोशल सर्विस कर रहा हूँ, ह्यूमन राइट बोले सोशल सर्विस कर रहा हूँ मैं। तो मेरे बोलने का वजह यह है कि आज जो है हम यहाँ जुड़े हैं यहाँ, तो हर साल जिस टाइम पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे रहता है तो हम कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली है सब ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हर एक जन को जो है जो साथ में जो अच्छा काम करे हुए हैं उनको साल में हम एक टाइम जो है अवार्ड देते हैं और सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो अच्छा काम करे हैं। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे 75 साल आज जो है ह्यूमन राइट्स को जो है हो गया, इंटरनेशनल जो है 75 साल हो गया है, तो हम लोग जो है मिलके जो काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो है टीम में कोई भी जगह पे जैसे दूसरे स्टेट से भी फोन आता है जो उनको समझ में नहीं आता है और हमको बोलते हैं सर ये काम करना है कैसे किया जाए, तो जो हमारे समझ में आता है हम उनको समझाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में हम सेकंड डे से जो है स्टार्ट करे, खुद ही से जो है हम खाना पकाते थे और जो है सब लोग को बांटना करना चालू करे। तो जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो हमारे टीम में हैं दूसरे स्टेट के, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि वो लोग भी फोन करके साहब हम भी काम चालू करें बोलने से हमको बहुत खुशी हुई। तो ये सब आप लोग की मोहब्बत है जो कि मेरे को जो है और आगे बढ़ाने के लिए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और तैयार हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे जैसे हमारे जज साहब जो है चंद्रया साहब जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन जिस टाइम पे थे, ये उस टाइम पे किधर भी अगर मीटिंग चलता तो हम जाते थे, साहब प्लीज जल्ला आप जो है ऐसा मीटिंग है आप आइए, तो बोलते हम तो पब्लिक के लिए हैं, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। और जिधर भी मीटिंग में आते थे तो हमारे चंद्रया साहब की कितनी भी तारीफ करेंगे तो कम है। किस लिए कम है
कि जब ये आके कोर्ट में रहते हुए यानी अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहते हुए भी एक पब्लिक के बीच जो है पब्लिक का जो भी तकलीफ रहता था वो पूरा करते थे। इनके पास जाने पे भी वहां पे कोई भी अगर इंसान लेके गया अर्जी दिया तो उनको बैठा के अच्छी बात करके कि क्या है बोलो, तो कुछ वो तो करते हुए जो डेट देते 2 महीने 3 महीने जो डेट देते वैसा नहीं। हमारे चंद्रैया साहब जो है फौरन जो है उसको डेट देके उसको कई फैसला करे और अच्छा काम करे हैं, तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। जब भी मैं कहीं भी जब अपना ये मीटिंग जैसे कि कोई भी भारी मीटिंग करता हूं तो मैं हमारे सर को याद करता हूं। इनसे बहुत कुछ हमको सीखने के मिला है, क्योंकि इनके सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं और साहब जो है हमारे को जो बहुत कुछ सिखाए हैं इनके बातों से, तो इनके सामने मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं। इसके लिए जो है अभी जो है मैं स्टॉप करता हूं, फिर और लोग भी आ रहे हैं बात करेंगे, मैं फिर भी लास्ट में जो है मैं बात करूंगा। सर थैंक यू सो मच सर। आज एक चीज बोलना है सर आपसे, एक चीज है सर, एक शख्स चित्तौड़ से यहाँ तक आज की इवेंट के लिए 2 व्हीलर पे आया हुआ है सर। उनका नाम है आमिर पाशा जी। एक बार आ जाइए सर, एक बार जोरदार तालियां दिए जो 2 व्हीलर पे वो भी चित्तौड़ से यहाँ पाना किलोमीटर 600 किलोमीटर से हमारे आमिर साहब जो है मोटरसाइकिल पे यहाँ पे आए हैं। क्यों? ये ह्यूमन राइट्स के लिए, ये आगे सोशल जस्टिस के लिए, ये हमारे से इतना मोहब्बत करते हैं कि इनके साथ में कोई आने वाला था वो आदमी जो है नहीं आया। जब ट्रेन का टिकट मतलब खत्म हो गया, ट्रेन चले गई, तो ये बोले नहीं 2 व्हीलर निकाले और वहां से जो है यहाँ तक जो है 2 व्हीलर पे आए। सर इतना एनर्जी कैसा आया आपको 2 व्हीलर पे, वो भी 600 किलोमीटर? या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम एक छोटा चीज करना चाहते हैं आज, वी वांट टू फेलिसिटेट यू सर। सो वहां से वो एक जगह पे हम लोग एक खास जगह बनाए यहाँ पे फेलिसिटेशन के लिए, ताकि बैनर भी है फॉर द मीडिया। मौसम पे बहुत ही मुश्किल होता है, और अभी आजकल तो बारिश भी गिर रहा है चेन्नई में, तो ये मौसम में 2 व्हीलर पे आना बहुत बड़ी बात है। सर दो वाक्य बोलना सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब लोगों को तुम्हारी दुआ है, पूरे दुआ करो। मैं हमारे शाह साहब के लिए कुर्बान, अभी इधर ही जान दे दो बोले तो दे दे दो। 5 बजे तक एक इंसान आ तुम बोले नहीं आया हो, अभी ट्रेन नहीं मिलती मेरे को, इसके लिए सीधा मेरी 2 व्हीलर थी, स्टार्ट किया, पेट्रोल टैंक फुल किया, अभी 4 इंच बाकी है पेट्रोल, आगे पहुंच गया मैं यहाँ तक। पहली बार आया हूँ इनके पास, पहली बार आया हूँ। ये शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स का तो बहुत बड़ी बात है। कहीं को तो जाको दरगाह में दुआ करती वैसा है, जो लोग जाको मंदिर में पूजा करती वैसा है, जो लोग जाको चर्च में बैठ के उसको ध्यान करती होता है। इसके लिए मैं हमारे शाह साहब के लिए मैं जितनी दूर अब उन्हें मंजे दिल्ली में रखे तो भी गाड़ियां नहीं स्ट्राइक बंद कर तो वो 2 व्हीलर में दिल्ली चल जा तुम, ये तो मेरा वादा है। मैं गाड़ियां रहे तो नहीं जाता, गाड़ियां नहीं तो ये स्ट्राइक क्या तो सीधा दिल्ली चल जाती। क्या ऑल इंडिया पर में कौन पूछता 2 व्हीलर। इसके लिए सुबह दुआ करो, हमारे शाह सोशल जस्टिस और भी बढ़ना चाहिए। सब इंगा मीట మనము ఈ షా సోషల్ జస్టిస్ ఎంతో ముందుకెళ్ళాలి, తీసుకెళ్ళాలి మనం। ఆయన పరువు, ఆయన ఒక మర్యాద, ఈ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ అంటే కొంతమందికి ధనలు పుడుతుంది, అట్లే ఏమిరా ఇది పరిస్థితి అని ఆలోచిస్తారు, ముందు పోవాలంటే కూడా ఆలోచిస్తారు। కాబట్టి మనమంతా కలిసి సివిల్ జస్టిస్ అండ్ హ్యూమన్ రైట్ కౌన్సిల్ కి మనం ఎంతో సేవ చేసి మనము ఈ సమస్యకు ఒక ఫ్యామిలీ మాదిరి అందరూ ముందుకు తీసుకొని పోవాలని మరి కోరుకుంటూ పెద్దలకు అందరికీ వందనాలు। बड़े आदमियों को सबको अस्सलाम वालेकुम, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को और उनके सलाम करता हूँ। सोशल जस्टिस मोहम्मद साहब की बदौलत से अभी और पब्लिक की और सर्विस करना चाहता हूँ और आगे और करेंगे और इस सर्विस को आगे और बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। I am coming from Kerala. I am actually Panchayat President in Kodacheri Grama Panchayat.
my panchayat is more people's is poor SC/ST category people, so is more development in package in designing there. So I very proud of the Shah International the joining with to the. Thank you, sir. Thank you so much, sir. And my dear brothers and sisters of the dais, the media persons, the well-wishers, the invitees, and the brothers and sisters who have come from various states to attend these celebrations. I extend my warm greetings of 75th years of anniversary celebrations of International Human Rights Day. I also extend my warm greetings to the brothers and sisters who have come from various states. I would request first to know as to how many of you have come from various states. I appreciate if they are pleased to raise their hands. कितने लोग बाहर स्टेट से आए हुए हैं, अगर वो लोग हाथ ऊपर किए, हमें जो है, I want to extend my greetings, my warm greetings to all of you. So how many of you are from Hyderabad city alone? कितने लोग हैदराबाद के हैं? My warm greetings to all of you. Thank you, sir. Because we are celebrating 75 years of anniversary celebrations. It is a great festival internationally. इसमें कोई लोग मेंबर भी नहीं होगा. ऐसे लोग कितने लोग हैं? Hand, raise your hands. Thank you very much. Now, हमारे सलीम साहब आके जो है यहाँ बात अमीर साहब आके जो है he wanted to sacrifice his life for the sake of Shah. For the sake of Shah means for the sake of social justice. Now here there is no difference between a social justice and Mr. Shah. इसलिए उन्होंने ऐसा कहा गया है. If I speak in English, how many of you will be able to understand? Almost all. If I speak in Hindi, how many of you will be able to understand? So it doesn't make any difference whether I would speak in Telugu or Hindi or in English. If I speak in Telugu, how many of you will be able to understand? Very few people will understand if I speak in Telugu. So may I speak in English? Can I speak? Yes. Brother Shah came to me 3 days ago with a request. Sir, we are going to celebrate 75th years of anniversary of the International Human Rights Day. May I request you to come and join us as a chief guest and address.
I readily agreed without any hesitation or without any time. The reason behind it was Mr. Shah was a friend of mine for the last a decade. Before I became a chairperson of the Human Rights Commission of State of Telangana, I used to participate in several social functions throughout the city and throughout the state, and particularly in the old city. In that process, Brother Shah came in contact with me. That is how we had interaction with each other on various aspects of the social problems of the old city, brothers and sisters. As a judge, I used to visit the entire state of Andhra Pradesh erstwhile, thereafter Telangana. While performing my duties as a judge, without absenting myself even a single day, for the rest of the days, particularly on Saturday and Sunday, I used to be there, either headquarters of one district or the other, by conducting legal awareness programs, addressing the lawyers, addressing the judges, addressing the teachers, addressing the students, and addressing the farmers. That was my activities as a lawyer for 22 years, as a judge for 11 and a half years, and as a chairperson of the state of Telangana for 3 years successfully. When I became a chairperson of the Human Rights Commission of State of Telangana, it was practically a COVID period for 2 years. The whole world has become a problematic situation. But as a chairperson, I myself and my two brothers, who are the members of the commission, were used to be awakened day and night to receive the complaints from the entire state about their problems. And it was a happy day for us to comply with by giving the necessary directions to the concerned authorities and to see that those directions are complied with. I am grateful to all the officers of the state, to whomsoever then Human Rights Commission of State of Telangana had given the directions and complied with, thereby the problems of these many male and female and children were solved. When Human Rights Commission took charge on 22nd December 2018-19, there were only 6 complaints. When we have laid down our office, we used to receive about 100 complaints a day, and about 300 complaints were used to be disposed of every day, and then and there and every day. That was my experience. Our further experience is when we have visited the entire state of Telangana, we realized
that the society, the commission needs to do a lot, making the people aware as to what are their human rights. The human rights are right to life, right to liberty, right to equality, and right to dignity. These are all the 4 important human rights of the people. Now we are celebrating the 75th years of International Human Rights Day. What is this importance of this day? I will tell you in few words. How many of you are able to hear me properly with an interest to hear me? Kindly raise your hands. Brothers and sisters, we believe that we know everything. We believe that we do not know anything. But the fact is that we know something, we do not know many things. But the world knows everything. As a member of the human world, it is the world is the best teacher to every individual. Even then, even though we are trying to learn something every day, but everything every day, something lacking in us to know. So therefore, on this occasion, I say 2 important principles. 1, knowledge is power. Knowledge is power. 2, education is the solution for all the problems. How many of you are able to agree with me? Knowledge is power. Thank you. Second principle, education is the solution for all the problems. Thank you. When you agree with us on these 2 principles, how many of you are aware as to what are the human rights? Kindly raise your hands. Very few. That means it needs to know what are the human rights. That means it means to know how the rights, human rights have been originated. It means we should know what is the original implications of not knowing. What are the implications of knowing? And what is the origin of it? You know that there was a World War I from 1914 to 1919. It was a time where the world has become ammunitionally so powerful by the time. Then the World War took place for no world welfare, but because of the ego of power, in which lakhs of people have died. Then they realized that unless there is an organization internationally which will make the people to unite and understand and live together in a peaceful manner, it is not possible to sustain in the world as a human beings, which resulted to have an organization called League of Nations in 1920. That organization had an existence from 1920 to 1946. Then they thought that a mighty organization has come with a cooperative understanding
between the nations. Therefore, there cannot be any world war thereafter. But it has become a dream. Thereafter, World War II came from 1939 to 1945, in which lakhs of people died, in which army and civilians. Then once again, the world countries came together and sat and had deliberations. What is the remedy? If you go on fighting with this ammunition, which is resulting for collapsing of the countries, dying of the people, and crushing the human society, then what is the use of this war? Let there be peace. Yes, let there be peace. Then what is the solution? Once again, let there be a good organization, so that once again we evolve a procedure as to how the entire human society will live together peacefully. Then on 24/10/1945, United Nations organization came into being. That was the organization like a central government, like a state government in a country. Now it is like a world government. It is a UNO, United Nations organization. Our India is one of the party in that organization. In that organization, there are several organizations are there, several departments are there to take care of the agriculture, health, monetary, everything. In that manner, they thought that what about the human rights? That was one of the subjects. When they thought it, what was the main object of the UNO was, number one, peace and security, to establish peace and security in the world. Number two, protect the human rights. Number three, rule of law. Rule of law means everybody has to follow the law of the international and the law of the nation. Fourth, and development. All these activities only for the development in the sense, the human development and the world development. These are the four principles basing on which the United Organizations came into being. Then, on 10/12/1948, this organization came into being, under which a Declaration of Human Rights were declared. On 10/12/1948, in which there are about 30 articles are there. Article 3 says that everyone has a right to life, right to liberty, a right to security of person. Article 3. Article 4 says that no one shall be subjected to any torture, cruel, inhuman, degrading in treatment or punishment. These are the important rights. Like this, there are about 30 articles are there dealing with the 30 rights in this Declaration of Human Rights. Thereafter, to protect the human rights across the world, several meetings have been taken place. They are called international conventions. One of such convention was International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1966. International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 1966. In this, there are about 31 articles. One of the articles says, Article 1 says, right of self-determination, right of political status, right of social and cultural status. And the third one is International Convention
on Civil and Political Rights 1966. There are about 53 articles are there in this convention, in this treaty. Then another important is to know what are the human rights. We have constitution known as Indian Constitution, in which there are about 395 articles are there. In that, there are 4 important chapters. One important chapter is fundamental rights. Second important chapter is fundamental duties. Third important chapter is directive principles of state policy. And the fourth one is the powers of the authorities. So the powers of the authorities are meant to protect the human rights, the fundamental rights of the citizens of the country. So therefore, chapter 3 of the Indian Constitution contemplates fundamental rights. Article 12 to 35. Article 12 to 13 deals with the general rights. Article 14 to 18 deals with right to equality. Article 19 to 22 deals with right to freedom. Article 23 to 24 deals with right against exploitation. Article 25 to 28 deals with right to freedom of religion. Article 29 to 31 deals with cultural and educational rights. Article 31 to 31D saving certain statutes, because prior to independence we had several laws. So the laws are protected under this article, that they are called saving of certain laws. Article 32 to 35 right to constitutional remedies. Constitutional remedies means if anybody's right is violated, they can approach directly to High Court by invoking the writ jurisdiction by way of filing the writ petition. So these are the 8 fundamental rights. These fundamental rights cannot be violated either by an individual or by the state. If any citizen's right has been violated, being violated, that person can approach under Article 226 of the Constitution of India to the High Court, or under 32 of the Constitution of India to the Supreme Court. These are the fundamental rights. In addition to this, there is a act known as Protection of Human Rights Act of 1993. This act, by virtue of this act, 2 institutions came into existence at the national level: National Human Rights Commission; at the state level, State Human Rights Commission. These commissions have got, under section 12 of the act, a very, very large powers are there. In any form, if anybody's rights is being violated by anybody, either they can complain to the state commission or they can complain to the national commission. Immediately they are empowered to safeguard the interest of the citizens by giving appropriate directions to the concerned authorities to protect the rights of the citizens. So therefore, brothers, this is for 2 reasons we are celebrating this 75th year of anniversary celebrations of International Human Rights Day. What is the purpose of it? 1, to appreciate our own efforts that we have done all these years. 2, to exchange our thoughts and ideas and experiences
that we have done in the field of human rights. 3, to decide what are the things that we have further to do in future. As you know that many of the brothers and sisters, about 60 people above 60 years of age are few, above 70 years of age are few, and most of them are youngsters. I am addressing, keeping in view of the young people. The young people did not see what was the future, what was the previous situation. The previous situation about the rights of the people very worst. When the kingdoms were there were no rights to anybody. Only kings were used to rule. But when the democratic system came, the question of rights came into existence. When our Indian constitution was framed by the Constitution Assembly, that is, before independence, we had an act known as Government of India Act of 1937. When we acquired the acquisition that is called independence on 15th August 1947, what happened was we need to have a constitution. Then we framed the constitution. We framed the assembly known as Constitution Assembly, in which there are about 389 members were there. Almost all are law graduates. There are about 21 committees were there. Fundamental rights, one committee. Director Principles of State Policy, one committee, like that. So for the purpose of framing of the Constitution, there was a committee known as Framing of the Constitution of India, for which Dr. B.R. Ambedkar was the chairman. There are about 7 members. Under his leadership, this Constitution was being framed below the period of 2 years. Then it was presented in the Constitutional Assembly on 26th November 1949. That day we are celebrating as a constitutional day. Thereafter, on 26th January 1950, the Constitution came into being, for which day we are celebrating the Republic Day. Whereas 15th August 1947, we are celebrating Independence Day. Like that, today we are celebrating 75th year of International Human Rights Day. Even though we have developed so much, after advent of the Constitution, several laws we framed. A laws to protect a child in the womb of the mother. There are several laws. There are several laws to protect the rights of the children. There are several laws to protect the rights of the women. There are several laws to protect the rights of the farmers. There are several laws to protect the rights of the laborers working in the field. And there are several laws to protect the rights of the senior citizens. But those laws are not being properly implemented till today. Therefore, it is the duty of the government to see that those laws are properly implemented through the agencies called executive. Why we are using the word executive means, under the Constitution, there are 3 important wings. One is the legislature, which makes the law. Another is the executive, which implements the law. Third one is the judiciary, which watches whether the laws are being implemented or not. This is how our government, not only here, everywhere functions in a democratic system.
So, brothers and sisters, it is a time that has come. All are not like us. There may be several people across the world this time do not have food. There are several people not like us as we today who do not have proper shelter. There may be crores of people in the world this time where there is no proper shelter for them. These are all human rights. Now it is the duty of the human rights activists to see that wherever such a situation is there, to form an organization in the form of an NGO and become the members therein and see that their rights are protected. How? Because authorities are meant to protect the rights of the citizens. Because for every action there is a law. All human conduct is governed by the rule of law. For example, we are going right side instead of left side. It is wrong. Nobody can find that you are doing the right thing when you are doing a wrong thing. And there is no excuse for committing a mistake and seeking the excuse. So therefore, ignorance of law is no excuse. Everybody is expected to know the rule of law and the law of the land. Law of the land means, one, the Constitution of India, and also the other laws that are governing. When we are holding the meeting in this situation, we are governed by law. What is that law? Under Article 19 of the Constitution, there is a provision. You have a right to assembly. You have a right to have a meeting. You have a right to express your feelings. You have a right to author your expressions. These are all fundamental rights. These are all not only fundamental rights, they are human rights. So therefore, we have traveled so much in protecting the human rights, but there is a long distance to be covered. There are crores and crores of people to whom human rights are not being protected. For example, in the world wide, wars are going on in somewhere between one country and other. The war is against the human life. The war is against the human rights. The war is against the law. So therefore, we need the peace in this country. We need the peace in the world. For which, what we need, we should have two elements. One, love. Two, service. This love and service alone will protect us and the others. Unless until we travel in these directions, the conflicts in the world will not solve. We need to have that. We need to have to cultivate. Love and service should be the motto of everybody. I hope and trust that today, in these celebrations, all of you will take a decision that we are not only alone as an individual, but we are the member of the world family, and the whole world is our family. And we serve them with love, and will serve them with affection, and will sacrifice them with a great spirit of love and service. So therefore, all of you, I expect and hope, leave these premises with a smile, with a full of love and service concept.
So therefore, I request all of you to concentrate on education and enhance knowledge. Nobody should feel alone. If anybody is there, there may be unemployment problem, there may be a physical problem, there may be a family problem, there may be an individual problem. In that, there may be a psychological problem, there may be financial problem, or there may be any problem, but share with others. When your human rights colleague is there, he will assist you, he will help you, he will make you to survive. So many young people are dying on the ground of dissatisfaction in life. Why you should have? When your parents did not have a proper food, they have not lost the confidence, they have not lost the courage. Why we should lose? We should have a courage. We will have a courage when we have a love and service. So therefore, kindly, all the human rights activists visit the schools and make them to know what are the human rights. Visit the hospitals and serve them along with the doctors. Visit the old age homes, serve along with the inmates of that area. Visit wherever people who are in trouble are there, please visit them, so that you will be able to give them confidence. Oh, our brother has come, oh, our sister has come, we need not worry about it. It is your duty to create a confidence. If you go on doing in this manner, then only it amounts to complying with the protection of human rights. So therefore, on this occasion, at the end, 2 suggestions. 1, everybody should read the Indian Constitution. Number 2, everybody should have in their hands a Human Rights Act. Then, third one is, everybody should have your own bylaws under which organizations you are working. We received, when as a chairperson, a complaints against some of the candidates who claim to be the human rights. Sir, these people are deceiving the people in the name of that organization. I did not agree with them. When you are failed, they are working. We did not believe. Suppose if a person commit an offense, all are before law, equal protection of law. Nobody is above the law. Whether the Human Rights Commission, whether a public servant or a minister or anybody is liable for an offense. How can you make? So therefore, everybody under the Constitution has got a right to constitute as many as NGOs. Now, the education is going on very well, not because of the government. It is because of the NGOs. What is non-governmental organization? There are many non-governmental organizations who are working for the welfare of the society. In the same fashion, it is the human rights NGO organizations are working in this country very well. I encourage for 3 years all the human rights organizations in state of Telangana. If I go in Telangana state, everywhere you will find the human rights organization. That is my crop. I am the farmer of that crop. So I never became a landlord, but I will become the owner of the crop and make them, all of them, as owners of that crop. So it is the Human Rights Activist will work in a democratic way, in a rightful way, in a justifiable way, in a lawful way to protect the rights of the citizen. So therefore, we are very happy today to have such a large gathering in this beautiful hall
I used to come and address several meetings in this, but those days are different. Now, as you have come with a good heart, with love and affection, so much of happiness, to enhance your happiness, a beautiful hall has been created for you. It was rather illuminated than the previous situation. The situation was not like this. So therefore, we are also congratulating the authorities who made this hall so nicely, so beautifully. In the conclusion, I only suggest you that you do your own activities, you do your own business, you perform your own duties. In addition to that, if you are a member of human rights organization of any NGO, please be thorough with the Constitution, be thorough with the Human Rights Act, possess these two acts with you, Constitution and Act with you. If you approach with identification card with any authority, with any problem of yourself or your brother or sister or anybody, the authorities will not say anything against you as to what is your right to approach us. You have a right. In fact, every citizen has got a right. But in this country, the executive tendency was that nobody should come representing the matter. The person who are facing the problem, they alone can come. When he doesn't have any knowledge, what is the position? So therefore, it is the authorities concerned with the right, with the protection of the rights of the citizen, but not the person who is coming with us with that such problem. So therefore, let brother come. Please come. Welcome. Now another voice has come. Please welcome. Come. सर आपका बहुत सारे दिल से स्वागत है सर. Welcome sir, a very warm welcome. Thank you for gracing our this wonderful meet today. Thank you so much sir. This brother is also a well-known a human protector of in twin cities of Hyderabad. हम सीखे इनसे, सांप से सीखे हम सांप के सामने बच्चे हैं. So when सांप बात करने को शुरू होता है, हमको डाउट है ये टॉप रहता नहीं रहता. So therefore, when I am concluding my speech, I am giving to open again the continue the speeches, and I wish you all the best, brothers and sisters. It is a very good day for all of us, and we are in a very good season. The December season is a season of flowers, roses in December. बोल के एक book था. When I was a lawyer, I was presented this book by a friend, written by a retired former judge. I have gone through it. Now the certain words are coming to my mind. So therefore it is a roses and December. Now I am seeing you that the seeds in which are also colored in a roses, and the faces that I am seeing is also like roses. Thank you very much. Sir, thank you so much sir. It was so wonderful and we could learn a lot of new things. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि हम किस तरह ह्यूमन राइट्स को हम आगे बढ़ाना है, ह्यूमन राइट्स किस तरह मांगना है. ये मांगने के तरीके से मांगना है तो हमें कामयाब होएगा. अगर मांगने के तरीके से मांगने के बावजूद भी जो पुलिस जो जुल्म कर रही है, उस जुल्म को रुकाने के लिए एक ही कानून है, वो वही कानून का नाम है इंडियन पेनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. इंडियन पेनल कोड के तहत सजाएं मुकर्रर किया जाता है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उसको मेजर किया जाता है. तो इसलिए हम लोग व्हाट इज आईपीसी एंड सीआरपीसी ये हम जानना चाहिए. और दूसरी बात,
हम हमारा हक का किस तरह हम इस भारत राजांग से हम लिए हुए 7 फंडामेंटल राइट्स सेक्शन 14 to 25, 26, 27, 29 ये सेक्शन हमें कहां तक काम आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कई लेडीज लड़कियां, कई हमारे बहनें, कितने लोग अपने 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 शहरों से कितना जुल्म पाके जब पुलिस स्टेशन आते हैं, जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले जो कहते हैं बस वही सर हिलाते हैं, बस निकल जाते हैं, केस बुक हो जाता है। नहीं, हमारा हक क्या है? ए पुलिस वाले, हमारा हक क्या है? किस हक के तहत आप हमें बैन कर रहे हैं? उस हक को जानना चाहिए, उस हक उठाना चाहिए, हक के मुताबिक बात करना चाहिए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, डू यू हियर मी प्लीज? तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हर वक्त हमेशा अब कई लेडीज विडाकुलू, कई लेडीज तलाक खुला लेना बड़ी बात नहीं है। लेने के बाद की जिंदगी, मर्द की जिंदगी आराम हो जाती है और औरत की जिंदगी जहन्नम हो जाती है। तो प्लीज ऑडियंस साइलेंस हियर। क्या है, हम नो कास्ट, हम पहले इंसान हैं। इंसान के हक, हिंदुस्तानी के नाते क्या हक है, ये मालूम कराने के लिए रात दिन जिद्दोजहद करते हुए इस असेंबली को बनाए हुए फिर हम दोबारा उनको ऐसे एक नेक और शरीफ इंसान को हम दिली मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। शाह साहब, आपको दिली मुबारकबादी हम पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जरा आवाज बढ़ाएं। हेलो भाई। या प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द माइक। और शरिया कानून, हदीस शरीफ, कुरान अल करीम से के हवाले से अगर हम प्रोड्यूस किया गया, हम पेश किया गया, तो बहुत लंबी बड़ी बात है ये। मगर वो लंबी बड़ी बात किए तो ही इंसानी फर्ज मिल सकता है, अपने हुकूक अपने लेडीज को मिल सकता है। मगर वो लेडीज को मिलने के लिए हम सर झुका दे रहे हैं। हम वो कोई आके डरा रहा, छुरी निकाल के डरा रहा तो डर जा रहे। तुम्हारे माँ बाप को मार देते हम बोल रहे तो डर जा रहे। तो लड़कियां क्यों डरे भाई, क्यों डरे? मेरे कोर्ट में मैं कभी माफ नहीं करा, मैं किसी लड़के को माफ नहीं करा। अगर लड़की चंद लोगों को जहर भी पिलाने के लिए कोशिश करी, मैं उसको भी माफ नहीं करा। हम बेशक हम इंसाफ किए हम, क्योंकि हम ये चीज जानना चाहिए कि पहले हम इंसान हैं। औरत जब शादी करके ब्याह करके जब आती है अपने माँ बाप के घर से, तो हम उसको किस तरह इज्जत देना है और किस तरह हम उसको पालन पोषण करना है, किस तरह हम उसको मर्यादा देना है, किस तरह हम उसको फूलों में रखना चाहिए, उस तरह नहीं रख रहे जेंट्स। इसीलिए तो ये दिलों में ना इत्तेफाकी आ रही है। और जेंट्स का भी बगैर बोलने के, बगैर करने के, మియా కి आपने అంటే భార్య భర్తల మధ్యలో ఉన్న రాగ అనురాగ బంధ సంబంధాలతో కూడిన ప్రేమాభిషేకమే దాని పేరు పెళ్లి, వివాహం। सो इसलिए मैं मेरे भाई बहन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि help them those who are helpless, the fear of the God is the beginning of the wisdom। तो हम लोग ये कहना चाहिए कि हमारे बहनों को किस किस्म से हम मदद कर सकते हैं। हम बिल्कुल हम मदद करना जरूरी है। इसीलिए तो शाह साहब ने बेचारे रात दिन यही सोच है उनकी, रात दिन यही सोच है। उन आज तक वो नेक इंसान है, वो इंसान हराम क्या चीज है वो बेचारे को नहीं मालूम। इसलिए मैं बेशक मैं उनके हर प्रोग्राम में मैं अटेंड इसलिए होता कि वाकई वो काबिल तारीफ है। रात दिन मेरे पास आके बोलते रहते कि साहब मैं कैसा हमारे लेडीज को, पूरे लेडीज को मैं कैसा सेव करूं, मैं कैसा सेव करूं। ये जो है ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उस्ताद हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखे हुए हैं। और जो ये बोलते हैं और ऊपर वाले से
दुआ करते हैं कि हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक हैं। आमीन। सबके बारे में बोलते रहते हैं आमीन। कि जो भी करना है ये जैसा ये बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो, उनके हम मतलब शागिर्द हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं। जो भी है हम आपसे जो भी है हम हमारे जो है जज साहब जो है नवाज बादशाह खान साहब जो हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी जो है हर साल कहीं भी हम जो है 10 दिसंबर को जब है मीटिंग लगाते हैं तो हम जाते हैं, साहब आप बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या बोलते हैं हमको? बेशक बेशक बेशक। आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। ये आप नहीं हम सबका है, ये शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ये सबका है। और ये अल्लाह ताला चाहे रहेंगे हमारे साथ है अल्लाह ताला। आज देखिए केरला से आए और जो है दिल्ली से आए लोग और अपना तमिलनाडु से आए और कर्नाटका से आए और यूपी स्टेट से कई डिस्ट्रिक्टों से आए हैं। और आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पन्मनेर से एक आदमी, एक हमारे जो है रायलसीमा प्रेसिडेंट जो है वो वहां से उनका साथी कोई बोला साथ में मिलके जाएंगे, तो वो उनको जो है हाथ दे दिया, नहीं आया साथ में, तो वो जो है 2 व्हीलर पे 600 किलोमीटर जो है 2 व्हीलर से जो है यहाँ हमारे बहुत बड़ी बात है शाह साहब, बहुत बड़ी बात है। आपका बुलावा, आपका जो इनविटेशन जो दिए हैं यहाँ पे, ये काबिल तारीफ है। ये आप ही कर सकते हैं, सारे तेलंगाना और आंध्रा में आप ही कर सकते हैं और दूसरे का किसी का मजाल नहीं हो सकता। इतने बड़ी कार्रवाई करके अपने लोगों को जान मान के साथ महफूज रख के और उन तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए उन तमाम लोगों को सिखाना और उन लोगों से और उन लोगों के सर पे साया जो रहना, अल्लाह आपको उम्र दराज करे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो है हमारे नवाज साहब जो हैं, इनको नवाब साहब भी बोल सकते हैं, नवाज साहब भी बोल सकते हैं और जो है बादशाह साहब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ऐसे हैं कि किसी के भी तकलीफ में उसमें जो है साथ देते हैं, कहीं भी बुलाए तो आ जाते हैं। तो मैं आप जो है ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब हमारी फैमिली है, हम सबको दिल जान से चाहते हैं। और हम ये बोलते हैं किसी को भी कोई भी तकलीफ है तो आइए हमारे पास, इंशाअल्लाह ताला हर जगह हम रेडी रहेंगे, आधी रात को भी रेडी रहेंगे। अगर मेरे से ना हो सका तो हमारे जो है जज साहब हमारे बड़े भाई हैं वो रेडी रहेंगे। हमको ये वादा करे हैं कि कभी किसी भी जगह पे किसी को भी तकलीफ है हमको बताइए, हम उसको जो है साथ देंगे। किधर भी रहने दो, इंडिया लेवल में कोई भी स्टेट में रहने दो, हम साथ रहेंगे और हम साथ देंगे। हमारे से वादा करे हैं हमारे जो है नवाब साहब और बादशाह साहब, जज साहब। अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया साहब, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स शाह मोहम्मद साहब, आई रियली अप्रिशिएट, आई थैंक यू वेरी मच। बट हमारे लोगों को हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं ये बात नहीं है, हम लोगों से क्या मदद कर सकते हैं ये मेन पॉइंट है। ये हम हाउ टू मेक ए हेल्प टू देम विदाउट पैसे, बगैर पैसों के, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी जहमत के, हम किसी जो मजबूर इंसानों को हम कैसा मदद कर सकते हैं। ये तमाम ये चीजें अगर सोचा गया तो रिजल्ट यही आएगा कि हम लोग उस काबिल के नहीं हैं जो लोग समझ रहे हैं, हम उस काबिल के हैं कि अगर भगवत गीता या कुरान या बाइबल जो पढ़ते हैं, एम्स आर डिफरेंट बट गोल इज वन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के नाते हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरों के दिल में प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, मगर खुदा के वास्ते फॉर सेक ऑफ गॉड कभी सियासत में नहीं जाना चाहिए। सियासत डायरेक्ट वे टू झूठ मक्कार हाथ देना, बस मदद करना नहीं हाथ देना, ये एक मक्कारी रास्ता है, वो रास्ते का नाम ही सियासत है। कभी वो सियासत में अपने बच्चों को अपनी औलाद को कभी हम लोग उसको उस तरफ रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। जो प्यार मोहब्बत जो बांट रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत लोगों से हमें जो ले रहे हैं, बस ये प्यार मोहब्बत ही दूसरों के लिए फायदा होना चाहिए।
तो और एक दूसरों के लिए जब तक हम मदद नहीं करते तब तक इंसान कहलाया नहीं जाता। इंसान जब कहलाया जाता, हेल्प देम दोज हु आर हेल्पलेस, मदद उसकी है करना चाहिए कि हम जो मुस्तहिक हो, बेशक हम उसकी मदद करना ही लाजिम है, तो इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं, उसको चाहे अपने जेब के पैसे भी क्यों ना हो खर्च करके हम उसको उसकी तकलीफ को दूर करना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर करते, जिस तरह हर चीज में आप अपने अपने प्रोफेशनल्स करते, उस तरह इंशाल्लाह हम भी सोचना है एक दूसरों की प्यार मोहब्बत में मदद करना। तो दुश्मनी कहाँ से आएंगी? एक दूसरों से अगर प्यार मोहब्बत में बढ़ गए तो दुश्मनी कहाँ से आएंगी? नहीं आएंगी। और कोर्ट के केसेस कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन पूरे गोल हो जाते, क्योंकि पुलिस वालों के पास से अब राइट्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। अब तक तो मैं मेरे बहनों और भाइयों बेटे के बारे में बोला, अब मैं पुलिस वालों के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। कभी कोई हिम्मत ना हारे, पहली बात, कोई कभी भी हिम्मत ना हारे। पुलिस बुला रहा, आप देखें शायद 3-4 दिन पहले मुबारकबादी के लिए हमारे डीजीपी साहब गए मुबारकबादी देने के लिए होने वाले सीएम के पास, तो उनको सस्पेंड किया गया। ये बहुत ही, अगर मेरे पास आए तो मैं बचा लूंगा उनको इंशाल्लाह। अगर मेरे पास आ गए तो मैं बचा लूंगा उनको। एक अच्छे आदमी है, नेक इंसान है वो, वैसे आदमी को इस तरह करे भी उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब देखिए, मैं ऐसा भी बात कर सकता हूं और ऐसा भी बात कर सकता हूं, ऐसा भी, क्योंकि मेरी आवाज बुलंद आवाज सुन रहे हैं, तो ऐसा भी मेरी बुलंद आवाज सुन रही है। तो सीएम बनने से पहले मुबारकबादी दिए तो क्या गलत है? सीएम बनने के बाद मुबारकबादी दिए तो क्या गलत है? आप लोग ही बोलिए। चॉइस इज योर्स। तो इसमें क्या है, कानून भी देख समझ के बनाना चाहिए, इलेक्शन कोड भी। तो कानून बनाने वाला भी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि राम जेठमलानी साहब, हम उनके पास थे, काफी बहुत बड़े एक लीजेंड, लीगल लीजेंड ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड के, हम उनकी शागिर्दी में थे सिर्फ ओनली 4 to 6 months। तो हम बहुत कुछ सीखे उनसे, बस 4 to 6 months वही सीखना हमारा सारी दुनिया में अपना नाम रोशन होगा। तो अगर उनके पास अगर हम लोग अगर रहे 1, 2, 3 साल, तो और क्या नहीं पा सकते हम। तो इसलिए आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरीथिंग दैट कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत वो चीज है अपने लोगों को सांस जिंदगी देने वाली है। वही मैं बोलाता हूं कि भी एक लड़की को छोड़ दिया, वो तो आराम पा लिया, फिर लड़का लड़की के बारे में उसका कौन है? अगर उसके माँ बाप नहीं रहते, उसके भाई बहन नहीं रहते, लड़की क्या होना चाहिए? इसलिए सुसाइड्स हो रहे, इसलिए मर्डर्स हो रहे। तो क्या इसीलिए एक माँ बाप आपको शादी करके दिए आप? इसीलिए उसी अरमान से माँ बाप मेहनत से मुश्किल से रिक्शा चला के अपने खून पसीना बना के पैसा बना के वो लड़की को जो शादी करते, क्या इसलिए कि बच्ची दुख से रहो, जिंदगी भर दुख से रहो और उसके मियाँ के उसके ये कर सकते हैं? तो इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग पूरा जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारी दुआ है कि आप तमाम लोगों को, अब हमारे को जितना भी जो भी मदद होना है आप बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल हमारा नंबर हमारे शाह साहब के पास भी है, और वहाँ भी आए तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगा, और इंशाल्लाह हमारे पास भी आ सकते हैं कुछ मदद के लिए इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। सर हम आपको ऐसे Dignitaries of the dais and my dear friends of the dais. So today it is our duty to fight against crime and corruption, atrocities, illegalities, misappropriation of government fund, post power, anywhere, anytime, any person to save the nation, to protect the poor and innocent peoples from the hands of corruption and crime. आज का दिन हम कहीं भी गए तो अपने को करप्शन क्राइम दिखता है, उसको निकाल देना है, इरेडिकेट करना है, बोल तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है। और मिस्टर
शाह सर के अंडर में हम सब काम कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ शुक्र अदा करेंगे सर का। आज हमारे बीच में ऐसे भी एक शख्स है जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करे, बहुत सारे नौजवानों को, लड़कों लड़कियों को जो सुसाइड होने से बचाए। आज अपने बीच में है डॉक्टर MA करीम साहब। एक बार ठहरे तो आप प्लीज स्टैंड अप सर। ये भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर करीम सेक्रेटरी है, हिमायत नगर में रहते हैं, बहुत सारे जिंदगी को बचाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मरने से बचाए, सुसाइड करने से बचाए। ये भी आज अपने बीच में है, इसलिए उनके लिए भी एक बार थालियों से स्वागत करेंगे। इसी के साथ ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि शाह सर मेरे को सिर्फ 1 मिनट टाइम दिए। थैंक यू वेरी मच, वन एंड ऑल। Thank you so much, sir. And also we have an from the organizer that this program is going on, sir. You should. It will be an honor if you can attend. Actually, extremely exhausted, but I didn't want to miss the opportunity. Sorry, मैं इतना अच्छा हिंदी बोल नहीं सकता हूँ, फिर भी मतलब दिल्ली में काम कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत तो दिल्ली हिंदी बोल लेता हूँ। वो शुद्ध वाला हिंदी है। I don't know if you all can understand. First of all, thank you for the introduction, but I am not IPS officer. Let's make that clear. ये हर जगह प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे, देर आर 37 सर्विसेज, IAS IPS, लेकिन लोग सिर्फ IAS IPS और IFS जानते हैं और कुछ लोग IRS जानते हैं बस। अगर सिविल सर्वेंट कोई आया, सिविल सर्विसेज में कोई आया, तो बाय डिफॉल्ट सब लोग यही समझते हैं कि इफ ही इज शॉर्ट IAS, इफ ही इज टॉल ही इज IPS। सो एवरीबॉडी विल थिंक दैट हर जगह यहाँ होता है। somewhere I go, and the next day I see in the newspaper Shri Aditya Praveen IAS has attended, so I feel so embarrassed to myself. लेकिन the selection list is same. 17 साल हो गए into the सर्विस में आने के बाद while preparing for civil service IAS IPS, जब प्रिपरेशन चल रहा था तो बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग मैं ये यहाँ पे ऐसे, बट इन रियलिटी बहुत स्ट्रगल हुआ था। मतलब 14 to 16 आवर्स दिन में आई हैड टू स्टडी। सिर्फ 2 दिन का खाना, जितना पैसा है उतना में ही पढ़ना है, वो सब आई हैव सीन ऑल दैट। नॉर्मली हम लोग मूवीज में देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट के अंदर भी कुछ लोग पढ़ के बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है रियलिटी। क्योंकि दिल्ली में घर ऐसे होते थे जैसे मैच बॉक्स, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ नहीं होता था वेंटिलेशन, सिर्फ फ्रंट डोर बैक डोर, सिर्फ फ्रंट डोर बैक डोर का वेंटिलेशन होता था। अगर दिन में भी पावर चला गया मतलब टोटल डार्क, बाहर आके पढ़ना पड़ता है। तो इन द नाइट अगर पावर चला गया तो बाहर आके स्ट्रीट लाइट के अंदर, बिकॉज कॉम्पिटिटिव फील्ड में जब आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, कुछ जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, तो एवरी सेकेंड इज इम्पोर्टेंट। अगर एक दिन में मतलब 24 आवर्स में कुछ नया नहीं पढ़े हो, मतलब उस एक दिन में आपको 1000 लोग ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर वो 1000 मेंबर्स को फिर रीच करना है, मतलब अनदर 10 days एक्स्ट्रा 2 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो सच इज अ कॉम्पिटिशन। तो ये सब ठीक है, ये सब तो फेस हो गया। मतलब जब सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब याद नहीं होता है। तो इन द एंड एवरीथिंग इज हैप्पी। So speaking about human rights, see human being is born, मतलब जब पैदा होता है तो everybody is born with fundamental rights, with the air to breathe, water to drink, you know, basic food and all. And for example even education भी basic है। Every person, every human being who is born, he needs education. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इवन दैट फंडामेंटल दैट राइट मतलब सब लोगों को दे आर नॉट गेटिंग दैट क्वालिटी एजुकेशन, दे आर नॉट गेटिंग एजुकेशन एट ऑल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब एजुकेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल है, जो ह्यूमन राइट है, उसके लिए वो उन लोगों को लड़ना पड़ रहा है, उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, विच इज़ बेसिक।
जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, उसके लिए भी वो लोग स्ट्रगल करना पड़ रहा है. दैट इज पेनफुल, मतलब वो ज़्यादा दुख. इसलिए जब मैं प्रिपरेशन हुआ, फिर सिलेक्शन जब हो गया, फिर जब पहला पोस्टिंग जब हुआ है, एक बार मैं कई ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाए थे कि कम ऐसे आके मोटिवेट करो, कैसे प्रिपेयर करना है कैसे. जब मैं वहाँ पे गया, इट इज़ ए फ्री कोचिंग सेंटर, मतलब गवर्नमेंट पैसा देता है 1 साल के लिए. जो भी पुअर बैकग्राउंड में है वो आके पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मैं देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अराउंड 180-200 लोग बच्चे थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे. वो क्या है कि सिविल सर्विसेज या IAS IPS ग्रुप 1 ये सब 1 साल में नहीं होता है, मतलब कभी कभी 2-3 साल 3-4 साल लग जाता है उन लोगों को. लेकिन कोचिंग सेंटर के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए सिर्फ 8 मंथ्स या 10 मंथ्स का टाइम मिलता है. जब तक वो फाउंडेशन कोर्स बेसिक्स पढ़ लेते तब तक 10 मंथ्स हो जाता है और उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है. बाहर आने के बाद फिर वही स्ट्रगल, घर पे पैसे नहीं मांग सकते, घर पे देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, बुक्स खरीदना होता है, खाने का मैनेज करना पड़ता है, फिर कोचिंग, वो सब. वहाँ से मैंने मतलब कुछ लोगों को आई थॉट मतलब सोसाइटी को वापस कुछ दे, पे बैक टू द सोसाइटी. सो वहाँ से मैंने शुरू किया कि मतलब मेरे स्पीयर में मैं सब जगह सब लोगों को हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ. तो इसलिए 13-14 ईयर्स हो गए, हर साल 10, 20, 30, अब तो ज़्यादा हो गए, उन लोगों को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ. 3,000 4,000 हॉस्टल फीस होता है, बुक्स के 1,000 होते हैं, मेस फीस 1,000 ऐसा कुछ होता है. तो 10-15 लोग होते हैं, उनका मैं मैनेज करके पे कर सकता हूँ. तो ऐसे नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग हैं करने वाले, लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं. आई एम जस्ट मतलब स्मॉल, वेरी स्मॉल. तो ऐसा 13-14 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ. तो अब क्या हो गया, मतलब 13-14 ईयर्स में ऐसा हो गया कि अपने हैदराबाद सिटी में 4-5 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जो मेरे से हेल्प लिए हुए बहुत साल पहले. अभी कुछ साल पहले ये सफदरिया एक स्कूल है वहाँ पे इन मेहदीपट्टनम, वहाँ पे मैं पढ़ाने गया था. वहाँ से एक जमीर मोहम्मद और एक सादिक दोनों कांस्टेबल बन गए. एक क्राइम में है और एक काचीगुड़ा कहीं पे पोस्टिंग में है. एक जगह मैं गया था चार मीनार में, वहाँ पे 4 या 5 साल पहले एक तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया था उर्दू ट्रांसलेटर का. आई डोंट नो कितने लोगों को पता है. जब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया था हैदराबाद तेलंगाना में, एक नोटिफिकेशन आया था उर्दू ट्रांसलेटर. वो ग्रुप 1 कैडर, बहुत बड़ा कैडर है. वहाँ पे मैं गया पढ़ाने के लिए, 1 हफ्ता मैं डेली गया, मोटिवेट किया. जिनको बुक्स नहीं था बुक्स खरीद के दिया, वो सब दिया. वहाँ पे एक लड़की थी, उनका नाम है फौजिया जाबरी. उनको मतलब कुछ भी पता नहीं था. जो उन्होंने बोला सर ब्लाइंडली आप जो बोले मैं वो पढ़ा, वो जो बुक्स आप दिए मैं वही लिखा और मैं सिलेक्शन हो गया. सिलेक्शन होने के बाद 80-85,000 का कुछ सैलरी था. उनको पता भी नहीं है कि सर यार क्या है सर, सैलरी बेसिक बता रहे हैं, ग्रॉस बता रहे हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था. डायरेक्टली जॉब अंडर श्री मोहम्मद अली जी, हु वाज होम मिनिस्टर देन, directly under him, directly under him. तो I felt so happy. मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 14 ईयर्स में हर एक साल कोई ना कोई IAS IPS में सिलेक्शन हो रहा है. बैंक जॉब्स, पुलिस, कांस्टेबल्स, इंश्योरेंस सेक्टर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, तहसीलदार, बहुत सारे लोग. मतलब what I am trying to say is that द सोसाइटी इज चेंजिंग. मैं सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ लास्ट में, सोसाइटी पूरा चेंज हो रहा है. मेरे टाइम में क्या बोलते थे, मतलब मेरे पापा लोगों को, अच्छा जॉब कर लो, पूरा अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा लाइफ जियो, 3-4 घर खरीदो और लैंड्स खरीदो, वो सब बोलते थे. अब क्या, अब पूरा चेंज हो गया. लाइफ एंजॉय करो, लेकिन सबके साथ बांट के एंजॉय करो. ट्राई टू हेल्प एज मेनी एज पीस. हमारे टाइम में हम जब बच्चे थे कोई नहीं ये नहीं बोलता था कि प्लांट ट्रीज, सेव एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन इंक्रीज, ये सब नहीं बोलते थे. पैसा, अच्छा जॉब ले लो, पैसा कमाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, ये सब बोलते थे. द होल लाइफ इज चेंजिंग. द
ह्यूमन मेंटालिटी थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो रहा है। सबके माइंड में यही होना चाहिए कि व्हेन यू गेट इनटू समथिंग, मतलब जब आप कुछ बन जाओगे, जब आपके पास 100 रुपीज़ है तो उसमें से 50 रुपीज़ आप किसको हेल्प कर सकते हैं, हु इज़ इन नीड। तो ऐसे करते करते इतने लोग हैं। यहाँ पे मैं वही बोलने के लिए आया हूँ कि अगर आप में से, मतलब आपके रिलेटिव्स में से, फैमिली में से, आपके एरिया में से कोई भी एनीबडी पुअर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है, आई एम रेडी टू अडॉप्ट। मतलब उनका बुक्स, हॉस्टल फीस, कोचिंग का जितना भी है, आई एम रेडी टू टेक केयर। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं 3-4 और दोस्तों को ऐसे, मतलब देयर आर सम लाइक माइंडेड पीपल, तो उनको मैं लेके मतलब सबको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप में से कोई है तो जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन में है, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आई विल विजिट द कॉलेज करियर डेवलपमेंट के लिए। इंडिया में कौन से जॉब्स हैं, कहाँ पे जॉब्स है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने जॉब्स है, बीसी के लिए कितने, एससी के लिए एसटी कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, बॉयज़ के लिए कितने हैं, कब नोटिफिकेशन आता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से बुक्स पढ़ना है, एवरीथिंग आई कैन एक्सप्लेन, आई कैन गिव करियर गाइडेंस, आई कैन सपोर्ट देम इन एनी अदर फॉर्म ऑल्सो। तो ये चीज़ मैं कहना चाह, दैट्स वाई इवन मतलब लेट हुआ था, टायर्ड हो गया था, फिर भी आई वांटेड टू कन्वे दिस, दैट्स वाई आई हैव कम हियर एंड आई होप आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर। इट इज, देयर इज नो स्मॉल और बिग गाय। एक बार क्या हुआ, मैं बहुत मतलब 20 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, बाइक में जा रहा था, तो उसमें गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैं ऐसे धक्का करके ऐसे लेके जा रहा था। बीच में से एक वाइट एंड वाइट में एक ऑटो वाला आया और ऐसे पाँव लगा के ऐसे पुश करते करते अपना ये मेहदीपट्टनम से उस साइड दरगाह साइड जाते वक्त कॉर्नर में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ तक मुझे लेके गया, ऐसे पुश कर दिया, तो मैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप के अंदर चला गया, वो राइट को चले गए। उसको मैं पीछे मुड़ के देखा, वो कहाँ चले गए। मतलब सिर्फ उनका काम था कि मतलब एक ऐसा हेल्प करके चले गए। एक और लास्ट एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं स्कूल में स्कूल में बस मिस हो गया था, बस में था, लेकिन हॉस्टल जल्दी जाना है क्योंकि हॉस्टल के वार्डन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, आर्मी वाले थे, बहुत मारेंगे। तो मैं दौड़ते रोड में जा रहा था, ऐसे लिफ्ट मांगते जा रहा था, दौड़ते जा रहा था। तो आगे एक फॉरेन कार रुका, तो मैं वो डोर खोल के अंदर बैठ गया। बैठने के बाद देखा तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी, मैं शॉक में आ गया। मतलब आप मुझे लिफ्ट दे रहे हो, मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि दुनिया में हर किसी को हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन हर कोई किसी को, मतलब एवरी पर्सन कैन हेल्प समवन समवेयर समटाइम। आप यहाँ पे ऐसे पैदल जा रहे हो, दौड़ते हुए जा रहे हो, लिफ्ट मांग रहे हो, मेरे पास गाड़ी है इसलिए मैं रुका हूँ, क्योंकि मैं भी इसी रास्ते से जा रहा हूँ। लेकिन आपके लिए मैं गाड़ी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लिफ्ट तो वहाँ तक दे सकता हूँ, बोल के चले गए। एवरीबडी कैन नॉट हेल्प एवरीबडी, बट एवरीबडी कैन हेल्प समबडी समवेयर समटाइम। तो ये बात कह के वो लोग वो मतलब वो वहाँ पे मुझे छोड़ के चले गए। वो कोई और नहीं थे, अपना मेगास्टार चिरंजीवी थे। ये बात मैं दूसरा तीसरी बार किसी से शेयर कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे मैं उतर के हॉस्टल चला गया। दोस्त से बोला है चिरंजीवी मुझे लिफ्ट दिया, तो उसने बोला हाँ अमिताभ बच्चन कल मुझे खाने पे बुलाया। तो मैं सोचा दोस्तों से ये शेयर करने से भी कोई यकीन नहीं करे, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा किसी से बोलूंगा तब यकीन करेंगे। तो ये help as many people as you can and as many times as you can, so that the humanity and everybody grow together. Thank you so much. शंकरैया साहब है और जज साहब हमारे क्या नाम सलीम साहब है, और ये पूरे जो
यानी ये प्रोग्राम को जो बनाने के लिए जो रात दिन जो मुश्किल से हमारे शाह साहब मोहम्मद शाह साहब ने जो बनाए हैं प्रोग्राम, ये इसलिए बनाए थे इस प्रोग्राम को जो अपने आवाम को एक लीगल एडवाइस के लिए, तमाम आवाम को एक फंडामेंटल राइट्स के लिए और तमाम आवाम को एक ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है मालूम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लीगल राइट्स के मुताबिक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है। हम लोग इतना गिर चुके हैं कि हम दूसरों की मदद लेने के लिए हम आदत हो गई है हमें, और हमारी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर कोई भी पुलिस रहो या पुलिस के कोई भी रहो या ऊंची अधिकारी रहो, कोई भी रहो, उन लोग अगर कोई पकड़े तो हम लोग क्या है, उन लोग जब पकड़े हम हमारे को तो हम करना क्या है। अगर उनको पकड़ लिया, अब स्टूडेंट्स है एकदम यानी बस रहो या कार रहो या स्कूटर रहो, पकड़ने का उन लोगों को हक नहीं है। वो सिर्फ रोक के पूछने का हक है, उनको पूछने का हक है। तो उसके लिए अपने बच्चे डर के भाग जाते रहते, तो ऐसे मुश्किल के संकट टाइम पे बच्चों एक्सीडेंट्स हो जाता, डर के भाग जाते पुलिस वालों से। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि हर लड़का लड़की बच्चा बच्ची हर चीज़ मालूम करना चाहिए कि सोशल जस्टिस हमारे वी हैव टू एक्ट ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। 10 दिसंबर जो है आज यहाँ पे मीटिंग रखा गया है, और हमारे जो है बादशाह नवाज खान साहब जज साहब और एक्स जज हैं, और जो है गुंडू चंद्रैया साहब और सलीम साहब, 3 जजेस जो है यहाँ पर जो है आए हैं, और जो है उनको वो यहाँ आके सब पब्लिक को ये समझाए हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ होता है और क्या करना चाहिए। और पुलिस जो है, पुलिस का जो भी प्रॉब्लम होता है तो राइट से उनको क्या है, किसी को भी डरा के कुछ भी कर देते हैं पुलिस वाले। तो कोई भी चीज डरना नहीं चाहिए, पहले मालूम कर लेना चाहिए कि क्या केस है और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर जिसको नहीं मालूम है वो हमारे ऑफिस में नामपल्ली केयर हॉस्पिटल के सामने भाग्यनगर कॉलोनी में आ सकते हैं, और किसी का भी तकलीफ है तो हम फ्री सर्विस करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही जो है ये सब पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि ये ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस जो बना हुआ है ये पब्लिक के लिए है। हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि जो है हमारे जो है खान साहब जो है, नवाज खान साहब जो हैं, ये हमको कई चीज़ बताए हुए हैं कि जो भी है कानून के हिसाब से अगर कोई गलत है तो उसको जो है उसको समझाइए, और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम गलत नहीं हैं तो, अगर हम गलत हैं तो गलती नहीं करना चाहिए, अगर गलत है तो वो जो है कानून के हिसाब से करेंगे वो, लेकिन अगर गलत नहीं है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों कि हमारे जो है ऐसे जज साहब और भी जज साहब हैं जो कि हमको जो है इसको एडवाइस देते हैं कि इस हिसाब से काम करिए, तो कानून के हिसाब से चलने के लिए बोलते हैं। और हम किसी से नहीं डरते हैं, हम सिर्फ जो है ऊपर वाले से डरते हैं, और कानून को हम इज्जत करते हैं और कानून से ही हम चलते हैं। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और कर्नाटका से आए, एपी स्टेट से आए, ये बहुत से स्टेट आज के डेट में जो है इंडिया में जो है ऐसा, अभी बिहार से आने वाले थे कुछ, उनको जरूरी काम निकल गया नहीं आ सके। ऐसा इंडिया में जो है हम ऐसा शाह सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड ह्यूमन राइट्स काउंसिल इंडिया के अंदर ऐसा फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? हम सही काम कर रहे हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। कब नहीं डरते? जब हम सही है इसके लिए नहीं डरते हैं। गलत नहीं करना चाहिए, जो गलत है उसका हमारे पास जगह नहीं है, जो सही काम करने वाला है वो हमारे पास वेलकम है, और कोई भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो सही है, जो सर्विस कर रहे हैं। शुक्रिया।
కోసం చూస్తూనే ఉండండి VCM న్యూస్, వాయిస్ ఆఫ్ కామన్ మ్యాన్.